Hello friends, happy weekend. I hope trading अच्छा गया है last week and all the best for coming week. I'm Shanandu Das. I'm a multi-asset trading and investment specialist. And welcome to another video regarding banking stock discussions with SD. Last week we discussed on the budding opportunities, and throughout the week some of the private sector banks have done well. सो आई थिंक अगर हम और मेरे पीछे जो वैसे दिख रहा है दैट इज द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 500, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर वीकेंड एनालिसिस. सो लेट्स गो टू चार्ट. जिनको पता नहीं, मैं दिस इज अ फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप जो मैं इस्तेमाल करता हूँ फॉर माय ओन ट्रेडिंग. सो इसके जरिए मैं एनालिसिस करता हूँ टू हेल्प आउट द स्टूडेंट्स और दोज हु आर यूजिंग द सेटअप. तो ये जो बैंकिंग स्टॉक, दिस पर्टिकुलर एनालिसिस आई डू ऑन अ वीकली बेसिस because banking stocks are great for trading. They are very important for the economy as well. So banking stocks वैसे मुझे काफी पसंद है, and they give good volume, good volatility. So broadly quite good they are for trading, and they tend to give good trends. So let's start with the private banks, alphabetical order. उसके बाद हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक को देखेंगे, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखेंगे. और ये जो एनालिटिक्स है इसमें वीकली चार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए मैं अपना स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ. क्या ये मेरा ट्रेडिंग लिस्ट में रहना चाहिए, नहीं, शुड इट रिमेन इन द ट्रेडिंग लिस्ट. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट. वी सॉ द बाई सिग्नल एंड उसके बाद द स्टॉक इज ऊपर जा रहा है. दिस इज नॉट फुल्ली वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर एनी बिग क्वांटिटी. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया. अगर ये यहाँ पे टूट गया तब जाके प्राइस हाईली पॉसिबल 790 टारगेट करेगा. सो ये रीजन जो होता है इसमें स्टॉक्स मोर ग्रेजुअली मूव करते हैं, थोड़ा ऊपर देन थ्रो अवे, ऊपर चला जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, ऐसे करके मूवमेंट करके आगे बढ़ता है. कोई फास्ट मूवमेंट जो आता है वो वंस वी गेट अ ब्रेक ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन उसके बाद. बट और वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत. लाइक लेट मी शो यू कि अगर ये फ्लैट जोन से ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी गोज अवे फ्रॉम द बुल्स. सो ज्यादा आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता. नेक्स्ट चांस रहता है कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे काफी टाइम स्ट्रगल रहेगा. बट एयू फाइनेंस का बैंक का चार्ट जैसे बना है, देयर इज अ वेरी स्मॉल विंडो बिटवीन नेक्स्ट वीक, वेरी लाइकली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक का एक जो विंडो है, दिस विंडो में दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इज स्लैंटिंग. अगर नेक्स्ट वीक इस लाइन का ब्रेक होता है और प्राइस ऊपर जाता है, देन द ब्रेक इज वाया दिस स्लैंटिंग जोन. और अगर ऐसा हो रहा है देन इट हैज लॉट ऑफ एनर्जी लेफ्ट एंड एयू बैंक कैन गो सिग्निफिकेंटली हायर. सो नेक्स्ट वीक मतलब शुभ मुहूर्त बोलते हैं ना, शुभ मुहूर्त है. जैसे नेक्स्ट वीक एक ब्रेकआउट का अगर ब्रेकआउट हुआ वी मे सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट वीक थोड़ा करेक्शन, देन वी स्ट्रॉन्ग, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी हाई स्ट्रेंथ लेके ये ब्रेकआउट होगा एयू बैंक में. तो एयू बैंक जो है, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो आपके रेडर में रहना ही चाहिए. कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, स्पेशली नेक्स्ट वीक अगर ब्रेकआउट हो रहा है देन ब्रेकआउट कैन प्रूव टू बी क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग वन. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक फाइनली लास्ट वीक का मिड में हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने लगा है. लास्ट वीक भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा था. नाउ इट्स ऑलमोस्ट, नाउ इट्स ग्रेजुअली गोइंग अप. लग रहा है कि एक्सिस बैंक हैज फर्दर अपसाइड ऑन इट्स स्केल. एक्सिस बैंक में वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अप मूव. नेक्स्ट वी हैव बंधन बैंक. इसमें हम लोग बेस फॉर्मेशन देखे थे और एक्सपेक्ट किए थे कि इस प्राइस कैन गो अप. प्राइस ऊपर गया है, बट सिमिलरली बंधन बैंक में भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आ रहा है. ये जो बाई सिग्नल के बाद वी आर सिग्निफिकेंटली अप, दैट्स गुड. बट अब हमारे जो क्राइटेरिया है फर्दर, क्योंकि बॉटम हंटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑलवेज, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग राइट. लाइक यहाँ पे भी बाई सिग्नल था, इधर भी बाई सिग्नल.
So we need a very strong ride. Some money you made bottom hunting, okay, but that's bottom hunting cannot be the only game, because it is very struggle, gradual move game. So Bandhan Bank can become good, yet to fulfill the criteria, very close. Maybe next week agar strong move hua and reaches here, it will start to satisfy the criteria. But ये एरिया इज बहुत ही स्ट्रॉन्ग. इसके बाद वी माइट सी अ कंसोलिडेशन. सो रेजिस्टेंस जोन स्टार्ट हो जा रहा है 220 से लेके 226. सो बंधन बैंक जो हम लोग बेस फॉर्मेशन और कमबैक देखे थे, इट वाज क्वाइट ए गुड. सो वही कमबैक वेरी लाइकली ये फर्दर स्ट्रेच होगा टुवर्ड्स 225. तब हम लोग आ रहे हैं सीएसबी बैंक में. सीएसबी बैंक में देखिए बाउंस बैक तो चल रहा है. बाउंस बैक जो हो रहा है दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए ये एम्प्टी लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है रिवर्सल में. टारगेट के बाद इट इज रिट्रेस. So it is very much expected this much move, but this does not mean the trend has changed back to bullish, because the candle is asking or pushing the stop loss higher. That means if the downward bears are not ready to give in. अभी तक वो गिव इन के मोड में नहीं है. का मेजोरिटी ऑफ द प्राइस एक्शन का कैंडल का पोर्शन दे आर होल्डिंग. So this is clearly a correction is happening in CSB Bank, but the stock is not at all ready for buying. इस kind of stock में आप रेनबो बाय सिग्नल अलर्ट लगा दीजिए and you are broadly done. Then you have City Union Bank. City Union Bank last week मैंने दिखाया था, यहाँ पे कोई अच्छा सा ब्रेक हो रहा है. अब काम है इसके ऊपर सस्टेन करना. It will continue to test. I don't know if it comes out, then we need, of course we need a second break. But इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा सिटी यूनियन बैंक को to make things starts working. And then it has already broken via a slanting zone and very likely 160 sustenance इसको पहुंचा देगा 192 पे. मतलब around 20% ये रहा flat line. 175 एक second 75 76. This is a strong resistance area. But ultimately, structure-wise, it should be heading towards this 203, 199. मतलब 200 का टेस्ट होना very very likely in City Union Bank. It is yet to satisfy the criteria, but special इसमें ऐड किया जा रहा है स्पेशल इंक्लूजन में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चार्ट. DCB बैंक का चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग in a sense. It is coming back from a very strong support zone. And DCB Bank can go big as well. इसका जो भी जैसे structure है, it is coming from DCB. DCB is coming from a very strong support area 127, 136. ये full support zone है. And main breakout level इसका है 154. But यहाँ पे already buy signal आ चुका है. So next week, once again, last day का down move के बाद we may see rally in the private bank as well. ये भी अपना criteria satisfy नहीं कर रहा है for big quantity, but starter quantity can definitely be done. Then we have Dhanalakshmi Bank. It is bouncing back, but no. जब तक full green candle, that is my minimum criteria. I think Dhanalakshmi could come down even lower, and finally अगर इस एरिया से full green candle मिल रहा है, I'll be more happy. ये देखो एक strong support area पे आके टेस्ट करके ऊपर जा रहा है. I'll be very very happy. Then we have Equitas Small Finance Bank. इसके बारे में last time हम लोग डिस्कस किए थे. सिग्नल आ रहा है. Now we have a buy signal. This is looking good. And next week Equitas may start satisfying हमारे criteria. अभी तक नहीं है, but this looks like a comeback which can test out this 113 area. मतलब another 7 to 8% gain is likely in the Equitas. Main resistance is it should not move below 98 in terms of closing. If it does, then the moods is spoiled. Bullish bias खत्म हो गया. फेडरल बैंक अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है. काफी दिनों बाद यहाँ पे हम लोग जो
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें जान आया है ऐसा लग रहा है। दिस इज फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पीबी। बहुत ही बढ़िया हुआ कि लास्ट डे वी हैड अ बिग डाउन मूव, ये रहा, बट दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। थोड़ा डाउन मूव हुआ अच्छा है, क्योंकि ओवरली हाई प्राइस में हम लोग कुछ नहीं करना पसंद करेंगे। बट एज लॉन्ग ये सस्टेन कर रहा है अबाउट 284 290, then definitely it has a very good potential towards further upside. सो कई सारे बैंक्स है जिनके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। दिस हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। ये अचानक से हुआ है, दैट मींस इट इज बेटर आप 10 मतलब थोड़ा क्वांटिटी छोटा करके कीजिए। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स एंड फर्दर हम लोग ऐड कर पाएंगे इसमें अगर ब्रेकआउट हो रहा है। ये इसका बेस फॉर्मेशन हम लोग नजर किए थे, इसका राइजिंग हम लोग नजर किए, ब्रेकआउट हम लोग नजर कर रहे हैं, और वेरी लाइकली कि फ्लैट जोन से ब्रेकआउट हुआ है। ये रहा फ्लैट जोन। तो ये जो एरिया है 1680, इसके पास थोड़ा स्ट्रगलिंग का एक्सपेक्टेशन, पर वो स्ट्रगल के बाद इट विल कम डाउन एंड देन फाइनली द ब्रेक इज लाइकली टू कम। हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल रहा हूं, देन वी कैन गेट ए गुड राइड इन एचडीएफसी बैंक। बहुत बहुत काफी टाइम बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग गुड कंपेयर टू, वो लोग बैटर्ड थे, नाउ दे आर मोर एनर्जाइज्ड एंड लुक्स लाइक गोइंग गुड। ये आईसीआईसीआई बैंक का रीडिंग अच्छा नहीं दिख रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वी विल अवॉइड आईसीआईसीआई बैंक एंड दिस इज नो बडिंग अपॉर्चुनिटी। आईसीआईसीआई डिड नॉट फेल मच, it was positive broadly but not looking good. Same IDBI, the momentum structure here is not good. Whereas look at HDFC Bank, the momentum structure, or say Fino Payment Bank, it is just turning around. But we have a mature momentum, and after that divergences in ICICI, we have a fading momentum in IDBI. So these kind of stocks are not good. Now this one can remain in my list. Now this is did not get a full green candle, but we may get it soon next week. IDFC First Bank, we may get the full green candle. This is mainly important because it's coming from a very strong base. And ये अगर 85 86 के ऊपर sustain कर रहा है, then we can get a very good ride on the upside on IDFC First Bank. It is a good mover, it's a good giver, so we can expect a lot of things. Next हम लोग देख रहे हैं IndusInd Bank. IndusInd Bank ये रहा, not a great yet. इससे बेहतर जो बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कई सारे स्टॉक्स को स्पेशल इंक्लूजन में मैं डाल रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, नो, दिस इज नॉट वेयर माय बैंक्स में मेरा पैसा रहेगा। दिस इज नॉट वेयर इट विल बी। डेफिनेटली यहाँ पे पैसा नहीं रहेगा मेरा, बिकॉज इट इज गोइंग डाउन और आई लव गोइंग अप, आई डोंट लाइक गोइंग डाउन। सो गोइंग डाउन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए गोइंग अप। तो ये जो गोइंग अप हो रहा है वो उस टाइम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पेशेंस इज पार्ट ऑफ द गेम। ना ये रहा करूर वैसा बैंक, ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, इसमें मोमेंटम चाहिए, इसमें काफी टाइम से अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तगड़ा मोमेंटम नहीं आया, बट नेक्स्ट वीक कैन बी किंग मेकर, बिकॉज बाकी सारे चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है दे आर सून विल लॉन्च स्टार्ट लॉन्चिंग काइंड ऑफ अ फास्ट मूव। कोटक बैंक इज इन अ not a good phase. इसका रेजिस्टेंस के बिलो इट इज अ कमबैक चल रहा है, बट वी डोंट हैव अ फुल ग्रीन कैंडल। कर्नाटका बैंक इज अ वेरी अर्ली कमबैक। I'll wait, let it come down maybe even lower towards this area 200 and then start launching. So Karnataka Bank is not there yet. Some of the top ऊपर जो डिस्कस की हम लोग बैंक्स, फेडरल, the City Union, then we have Fino Payments. These are looking much better rather than RBL is giving a buy signal, but it's far away. I'm not so convinced at the moment that it can sustain the momentum. This is not from like any strong support level. This is from a double bottom base से buying आया है. I'm not sure yet RBL, so I'll give up on RBL and wait for the criteria to satisfy. 70 is the
स्ट्रेंथ स्कोर हमें यहाँ पे चाहिए टू सेटिस्फाई। सेम फॉर साउथ बैंक, साउथ इंडियन बैंक। I think Suryodaya Roshni bhi same. It does not have the strength I need. I need a strength and the clear breakout. Once that happens, then only Suryodaya Small Finance Bank can be considered well. Then I have Tamil Nadu Marka Bank. Tamil Nadu Marka Bank, and this is once again a comeback, but this stock is not, I'm not ready. I need a strong break, और इसका कोई flat line का option है ही नहीं. So this one is still not good. It is forming a base, दिख ही रहा है वो, but it's still not good enough for me to go for investment in these stocks. So Ujjivan Small Finance Bank, base बना रहा, थोड़ा कम. I'm not interested in थोड़ा, I'm interested only in big ride. So big ride के लिए stock ready नहीं. So what I will do? Avoid. Patience, जैसे मैंने बोला, is the name of the game, and rejection. Rejection principle is very important. This stock, reject it. I don't care about it's any news coming up. When it will be ready like this, I'll may go for investment. Otherwise, I'll not. So these are the stocks that's looking good. Axis Bank, AU Bank may come up. AU Bank next week, चलिए ठीक है, इसको डाल दिया फोकस में. इसका चार्ट स्पेशल है, कहां से ब्रेक हो रहा है इंपॉर्टेंट. फिर सिटी यूनियन, डीसीबी, दीज आर द बैंक्स जिसके ऊपर मेरा नजर रहेगा, एंड ऑल्सो जिसमें मेरा पोजीशन. नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट बैंक्स तो बेहतर लग रहे हैं. व्हाट अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक? आर दे गुड? पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, नो नॉट येट. दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया. इट्स नॉट अ कमबैक मोमेंटम. पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कई रैली मैच्योर हो चुके हैं. नो नो. बैंक ऑफ इंडिया इज नो नो थिंग. कनाडा बैंक मोमेंटम फेड हो रहा है. ये बाइंग का अटेम्प्ट, दीज आर नॉट सस्टेनिंग. आई विल बी वेरी केयरफुल इन Kannada Bank. It is where the private sector, where now the actions are happening. This is not, once again, not good. Momentum is fading. Be very careful. Sudden dip may come down in banks. Same Indian Bank. No, not good. Momentum fading. Lot of yellow, green. Lot of zigzag volatility दिख रहा है. IOB, momentum fading, will stay away. Then our Bank of Maharashtra, no, not at all. यहाँ पे पैसा rotate हो रहा है. Definitely it is not a full any general as a banking sector on. It is more of a private sector banks come back rather than public sector. Public sector में खास कुछ दिख ही नहीं रहा. State Bank of India ऊपर जा रहा है, but that is a fading bull phase. These phases are good for profit booking. Plus we have red caps on the weekly. अगर आप ठीक से देखेंगे तो UCO Bank not good. Clearly momentum flat. ये stock में रह के you are just increasing your risk. Union Bank of India not good. जो स्टॉक अच्छे नहीं है हम लोग उसमें रहेंगे नहीं. सो करंटली जिसमें अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं उसमें खास कुछ है प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कुछ बढ़ रहे हैं पहले से ही. जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हम लोग बेस फॉर्मेशन देखे, फिर उसमें जो शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, दैट्स द टाइम टू एंटर एंड इट हैज फर्दर इंक्रीज. अ फ्लैट जोन से ब्रेक मतलब दिस इज गोइंग टू स्ट्रगल अ बिट एट दिस टॉप. So let it struggle, let it come back, and the next opportunity you may buy again. But this is HDFC Bank's break. Matlab very likely it can at stretch go up and then go down. Matlab struggle se pehle it can try attempt a break and push higher. So HDFC, a strong comeback is happening. So similarly, lot of banks in the private sector which are showing some kind of comeback. IDFC First Bank जैसा हमने देखा, अभी भी रेडी नहीं है स्टॉक, बट नेक्स्ट वीक हो सकता है कि इनिशियल एक एंट्री करने की से. लॉट ऑफ गुड क्वालिटी बैंक स्टॉक्स, मतलब बैंक स्टॉक्स कुछ प्राइवेट सेक्टर में एनर्जाइज हो जा रहे हैं. उसी के ऊपर नजर रखना पड़ेगा. पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा हटाना पड़ेगा. वहां पे मोमेंटम क्लियरली फेड हो रहा है.
So that's all. Thank you for joining in this banking stocks discussion. I hope this video was helpful. Agar helpful हुआ, don't forget to like and also subscribe to my channel. All the best to you. And as always, happy trading.